Children, let us now practice some of the numericals of NCERT. The first question is calculate the mole fraction. ये mole fraction based question है of ethylene glycol C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 means ethylene glycol by mass. तो अब हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइकॉल का, right? Now it is the solution. अब solution when it is saying, then it is but obvious that it is dissolved in water. If nothing else solvent is given, then you will consider the solution is made in water. So let's see how to do it. First of all, you write C2H6O2's molecular mass you have to calculate. Now carbon is 12 into 2, hydrogen is 1 into 6 and oxygen is 16 into 2. So it comes out to be 62 gram per mole. Okay, and you know that water's mass is, molecular mass of water is 18 gram per mole. Now the formula of Chi C2H6O2 is number of moles of C2H6O2 divided by number of moles of water plus number of moles of C2H6O2. First of all, we have to calculate the number of moles. So now number of moles, the formula of number of moles is weight upon mass, or you can say mass in gram divided by molar mass. Now according to question children, it is given 20% of ethylene glycol. This means 20% solution का मतलब है 20 gram of C2H6O2 in 80 gram of H2O. This means this. Okay, so let's calculate N of C2H6O2 is equal to 20 upon 62 and N of H2O is equal to 80 upon 80. दोनों का number of moles, if you want you can calculate it here or you can calculate it later on. Let's put the value of these number of moles in equation number 1. This is equation number 1. So Chi C2H6O2 is equal to 20 upon 62 divided by 80 upon 18 plus 20 upon 62. So on solving this, we'll see the answer over here. On solving this, देखो 20 upon 62, 80 upon 18. They have calculated it here only. They have calculated it. इसका मिला 0.322. इसका number of moles मिला 4.44. So X of glycol is, by solving all this, we'll get 0.068. ठीक है, 0.068. अब आपको chi of ethylene glycol मिल गया है. If you have to take out the chi of water, then you will subtract the chi of ethylene glycol by 1. तो आपको मिल जाएगा 1 minus 0.068. So your answer will be 0.932. ठीक है, this is the way you will calculate it. I hope आप लोगों को मोल फ्रैक्शन करना समझ आ गया किस तरह से करना. Let's see the second question based on molarity. Let's see the question children on molarity. Molarity of a solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml solution. You have to calculate the molarity of a solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml of solution. Now you know that molarity is equal to
molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of solution, and you can see in the question it is given in milliliters, so in milliliter multiplied by 1000. अब number of moles of solute मतलब your solute is NaOH, NaOH का मास होता है 23 plus 16 plus 1, 16 plus 1 that is 40. तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे W/m. अब यहाँ पे कह रहा 5 ग्राम, तो हमारा W इज़ 5 डिवाइडेड बाय 40, सो इट कम्स आउट टू बी 1/8. ठीक है, दैट इज़ इन फ्रैक्शन 0.125. अब बच्चों ये आ गया हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स. Now in m you will put 0.125 is the number of moles. Volume of solution given in the question is 450 ml. So let's write it 450 multiplied by 1000. So answer you are going to solve it and ultimately you will get it 0.278 ml. ये आपका आंसर बन जाएगा. वेरी सिंपल, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है, कोई खास इसमें दिमाग नहीं लगाना. So this was question number 2.1. This was question number 2.2. This was solved example 2. Now we'll do example 2.3. देखो question. ये देखेंगे. The molality of 2.5 gram of ethanoic acid. Molality of 2.5 gram of ethanoic acid in 75 gram of benzene आपको निकालनी है, कैलकुलेट करनी है. अब बेंजोइक इथेनोइक एसिड है CH3COOH. आपको इसका मास निकालना है सबसे पहले, मॉलिक्यूलर मास 12 plus 1 into 3 plus 12 plus 16 into 2 plus 1. ओके, ये आ जाएगा. आई थिंक 63 आना चाहिए. 60 आया है. ठीक है, इसका मास है 60. अब आपका फॉर्मूला है मोलालिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट. अब क्योंकि हम देख रहे हैं हमारा यहाँ पे जो मास है ये ग्राम्स के टर्म्स में आ रहा है, तो हम यहाँ पे लेंगे इन ग्राम्स है, तो इंटू का 1000 करोगे आप, इंटू 1000 विल बी डन. सो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W/m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड. सो W है हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2.5 ग्राम. You can see 2.5 gram. 2.5 gram divided by molecular mass is 60. So solving this up you will get 0.0417. अब मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 75 ग्राम बेंजीन का. ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्वेंट आपको बता दिया है, बेंजीन नहीं बोलेगा तो वाटर समझते हैं. सो इट इज़ m is equal to 0.0417. According to question the mass of the solvent is 75 grams multiplied by 1000. तो मोलालिटी आपको मिल जाएगी 0.556 मोलल सॉल्यूशन. तो ये बच्चों 3 न्यूमेरिकल, अब बेसिकली यही 3 के आपको आएंगे. एंड ppm या मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, इनके क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं. दे आर वेरी रेयर एंड दैट टू नेवर आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. ओनली मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी एंड मोलारिटी, ये 3 एक्सप्रेस कर, दीज 3 टर्म्स इज जनरली आस्क्ड इन द बोर्ड.
these two terms are asked. Okay.